હેલો બાળ દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તમે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી હોમ લર્નિંગના માધ્યમથી જુદા જુદા વિષય ભણી રહ્યા છો. આજે આપણે વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ 8માં પુનરાવર્તન કરીશું. તમે ધોરણ 8માં અત્યાર સુધી કુલ 2 પ્રકરણ વિશે શીખી ગયા. પ્રકરણ 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન, પ્રકરણ 2 સૂક્ષ્મજીવો, મિત્ર અને શત્રુ, જેમાં પ્રકરણ 1માં તમે પાક ઉત્પાદન એટલે કે ખેત ઉત્પાદનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અથવા રીતો અને પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક એ વિશે શીખી ગયા. જ્યારે સૂક્ષ્મજીવો, મિત્ર અને શત્રુ એ પ્રકરણમાં સૂક્ષ્મજીવોના પ્રકારો, સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં રહે છે, સૂક્ષ્મજીવો અને આપણે, સૂક્ષ્મજીવોની ઉપયોગિતા, હાનિકારક સૂક્ષ્મજીવો, સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા મેળવાતી રસી, જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન અને નાઇટ્રોજન ચક્ર વિશે શીખી ગયા. આજે આપણે આ બંને પ્રકરણના પુનરાવર્તન પ્રશ્ન મંચના માધ્યમથી કરીશું. તમને બધાને ક્વિઝ રમવી તો ખૂબ ગમે છે, તો તમારી સામે આજે બંને પ્રકરણ આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો રજૂ થશે. આ પ્રશ્નના વિવિધ કાર્ડ્સ અહીંયા બનાવેલા છે. આ કાર્ડ્સ એક પછી એક તમારી સમક્ષ રજૂ થશે, જેમાં એક પ્રશ્ન અને તેના 4 વિકલ્પો આપેલા હશે. પ્રશ્નના ઉત્તર માટે તમારે આ 4 વિકલ્પ યોગ્ય રીતે વાંચવાના છે, સમજવાના છે અને યોગ્ય અને સાચો ઉત્તર શું આવશે તે વિચારીને કહેવાનું છે. તો તમે તૈયાર છો ને આ પ્રશ્ન મંચ રમવા માટે? તો ચાલો રમીએ પ્રશ્ન મંચ. સૌપ્રથમ પ્રકરણ 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન માટેના કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રથમ પ્રશ્ન તમારી સામે છે, ખરીફ પાકનું ઉદાહરણ કયું? જેના વિકલ્પો તમે વાંચો. વિકલ્પ A વટાણા, B રાઈ, C અળસી, D સોયાબીન. આ 4માંથી કયો ઉત્તર સાચો બનશે? હા, તમને ખરીફ પાક અને રવિ પાક આ બંને પાકના કેટલાક ઉદાહરણ યાદ હશે જ. આ બંને પાકના વિવિધ ઉદાહરણ વચ્ચે ભેદ પાડો અને નક્કી કરો. બરાબર છે, તમારો જવાબ સાચો છે. વિકલ્પ D સોયાબીન જેનો સાચો ઉત્તર છે. ત્યાર પછી આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. રવિ પાકનું ઉદાહરણ કયું નથી? જોજો હો, પ્રશ્ન તમારે બરાબર સમજવાનો છે. રવિ પાકના ઉદાહરણ અહીં આપેલા છે, એમાંથી કયું નથી એ તમારે પસંદ કરવાનું છે. તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે રવિ પાક અને ખરીફ પાક આ બંનેના ઉદાહરણ અહીંયા મિશ્ર આપેલા છે, જેમાંથી જવાબ મળશે આપણને. બરાબર છે, ખૂબ સરસ, ડાંગર. વિકલ્પ C સાચો બનશે. આ તો ખૂબ સરસ મજાનો પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ આવ્યો. ખેડૂતના મિત્ર કોણ? ઉત્તર આવશે B અળસિયા અને સૂક્ષ્મજીવો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ખેતરને સમથળ કરવા કયું ઓજાર ઉપયોગી છે? તમે પ્રકરણ 1માં ખેત પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરતી વખતે પરંપરાગત ઓજાર અને આધુનિક ઓજાર આ બંને વિશે શીખી ગયા છો, તો તમને ખ્યાલ જ હશે. શું જવાબ આવશે? પ્રશ્ન ખૂબ સહેલો છે. ખેતરને સમથળ કરવા સમાર નામનું ઓજાર ઉપયોગી બને છે. પ્રશ્ન 5 પાક ઉત્પાદનનો સૌથી મહત્વનો તબક્કો કયો? 4 વિકલ્પ તમારી સામે પ્રસ્તુત જ છે. A
વાવણી, બી રોપણી, સી લણણી, ડી સિંચાઈ. વેરી ગુડ. ઉત્તર આવશે એ વાવણી. આ પ્રશ્ન તો ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે આપેલો છે, તો ચાલો વાંચીએ. આધુનિક સમયમાં ખેતરની ખેડ ટ્રેક્ટર દ્વારા સંચાલિત ખાલી જગ્યા વડે કરવામાં આવે છે, જેના 4 વિકલ્પ આ પ્રમાણે છે. એ હળ, બી દાંતી, સી ખરપિયા, ડી સમાર. વેરી ગુડ. જવાબ આવશે બી દાંતી. પ્રશ્ન 7. કુદરતી ખાતર તરીકે કયું નહીં ગણાય? ઉત્તર તરીકે આવશે સી યુરિયા. આગળનો પ્રશ્ન જુઓ. NPK ખાતરમાં કયું તત્વ નથી? તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે NPK એ કૃત્રિમ ખાતરનું ઉદાહરણ છે. NPK જેમાં N નાઇટ્રોજન દર્શાવે છે, P ફોસ્ફરસ દર્શાવે છે અને K પોટેશિયમ. પણ એવું કઈ રીતે? પોટેશિયમમાં તો P આવવો જોઈએ ને. હા, લેટિન ભાષામાં પોટેશિયમને કેલિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલા માટે અહીં કે એ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થયેલ છે. તો હવે સ્પષ્ટ છે, NPK ખાતરમાં સોડિયમ એટલે કે ઉત્તર તરીકે સી આવશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા કઈ વનસ્પતિના મૂળની મૂળ ગંડિકાઓમાં જોવા મળે છે? વિકલ્પ 4 આપેલા છે. એ બાજરી, બી ઘઉં, સી ચણા, ડી ડાંગર. વેરી ગુડ. વિકલ્પ સી ચણા એ સાચો ઉત્તર છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ફળ આપતી વનસ્પતિના બગીચા તેમજ વૃક્ષોને પાણી આપવાની સર્વોત્તમ સિંચાઈ પદ્ધતિ કઈ? તમે ખેત પદ્ધતિઓ તરીકે સિંચાઈ એવો એક તબક્કો શીખી ગયા છો. આ સિંચાઈના વિવિધ પ્રકારો છે. યાદ આવી ગયું ને? ખૂબ સરસ. જવાબ તરીકે આવશે બી ટપક પદ્ધતિ. આગળનો પ્રશ્ન જુઓ. હાર્વેસ્ટર અને થ્રેશરનું સંયુક્ત સ્વરૂપ કયું? વેરી ગુડ. 4 વિકલ્પ પૈકી એ વિકલ્પ સાચો છે. હાર્વેસ્ટર અને થ્રેશરનું સંયુક્ત સ્વરૂપ એક કમ્બાઇન મશીન તરીકે ઓળખાય છે, એટલે ઉત્તર આવશે એ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કોડ લીવર ઓઇલમાં કયા વિટામિનની માત્રા વધુ હોય છે? વેરી ગુડ. વિટામિન ડી. વિકલ્પ આવશે સી. હવે આપણે આગળ વધીએ પ્રકરણ 2 તરફ. સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન તમારી સામે પ્રસ્તુત છે. આમાંથી કયું સૂક્ષ્મજીવ અન્ય સૂક્ષ્મજીવો કરતાં અલગ પડે છે? વિકલ્પ એ લીલ, વિકલ્પ બી ફૂગ, વિકલ્પ સી વાયરસ, વિકલ્પ ડી પ્રજીવ. યાદ આવે છે મિત્રો? વેરી ગુડ. લીલ, ફૂગ અને પ્રજીવ આ બધા જ સૂક્ષ્મજીવો કરતાં અલગ પડે છે એવો સૂક્ષ્મજીવ છે વાયરસ. એટલે ઉત્તર આવશે સી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. સતત આકાર અને સ્થાન બદલતું સૂક્ષ્મજીવ કયું? વેરી ગુડ. જવાબ તરીકે આવશે બી અમીબા. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કયા બેક્ટેરિયા દૂધને દહીંમાં પરિવર્તિત કરે છે? લેક્ટોબેસિલસ બેક્ટેરિયા દૂધને દહીંમાં પરિવર્તિત કરે છે. અહીં તમારે એક પ્રક્રિયાને ઓળખી કાઢવાની છે. પ્રશ્ન વાંચો. શર્કરા એટલે કે ખાંડ. શર્કરા ખાંડનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે?
વાહ, ખૂબ સરસ. ઉત્તર તરીકે આવશે એ, આથવણ. આથવણની પ્રક્રિયા છે જેમાં શર્કરાનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. બેકિંગ ઉદ્યોગમાં અર્થાત બેકરીના ઉદ્યોગમાં કયા સૂક્ષ્મજીવનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવશે સી, યીસ્ટ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. કયા રોગ વિરુદ્ધ વિશ્વવ્યાપી અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું? તમને મિત્રો ખ્યાલ જ છે, ઘણા રોગ એ મહામારી તરીકે દુનિયામાં ફેલાતા હોય છે. વેરી ગુડ. ઉત્તર આવશે શીતળા. તમારે અહીંયા કેટલાક વૈજ્ઞાનિકને યાદ કરવાના છે. જો વૈજ્ઞાનિક છે એની શોધ માટે આપણે કદર કરવી જોઈએ, ખરું ને? પ્રશ્ન વાંચો. પેનિસિલિન દવાની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી? વિકલ્પ અહીં આપેલા છે. એ, એડવર્ડ જેનરે, બી, એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે, સી, લુઈ પાશ્વરે, ડી, રોબર્ટ કોશે. પેનિસિલિન દવાની શોધ કરનાર વૈજ્ઞાનિક છે એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ. ઉત્તર તરીકે આવશે બી. જુઓ, પ્રશ્ન છે જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપક કોણ? વેરી ગુડ. જવાબ આવશે બેક્ટેરિયા અને નીલહરિત લીલ. આગળનો પ્રશ્ન વાંચો. મેલેરિયાના પરોપજીવીનું વાહક કોણ? વેરી ગુડ. મચ્છર તો યાદ છે જ, પરંતુ ઉત્તર તરીકે સ્પષ્ટ શું આવશે? માદા એનોફિલિસ મચ્છર, એટલે કે સી. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. હિપેટાઇટિસ એ માટે જવાબદાર સૂક્ષ્મજીવ કયું? હિપેટાઇટિસ એ માટે જવાબદાર સૂક્ષ્મજીવ વાયરસ છે. આ પ્રશ્ન પણ સરસ રીતે મુકાયેલો છે, વાંચો જોઈએ. ખોરાકની જાળવણી માટે સામાન્ય રીતે જાળવણીકારક પદાર્થ શું વપરાય છે? ઉત્તર તરીકે આવશે મીઠું અને ખાદ્ય તેલ. મિત્રો, તમને આ બંને પ્રકરણના અલગ અલગ પ્રશ્નો વાંચવાની, સમજવાની અને વિચારીને કે યાદ કરીને તેના ઉત્તર આપવાની ખૂબ જ મજા આવી હશે. તો આ બંને પ્રકરણ આધારિત વિષય વસ્તુનો ઘરે બેસીને મહાવરો કરતા રહેજો, પુનરાવર્તન કરતા રહેજો. આગળના અંકમાં આપણે નવા પ્રકરણ તરફ આગળ વધીશું. પ્રકરણ 3. તમને એનું નામ યાદ છે? બોલો જોઈએ. હા, વેરી ગુડ. સંશ્લેષિત રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક એ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. ત્યાં સુધી આવજો. नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से हमने शुरुआत में कविता का आस्वाद किया, उसी तरह उसके बाद कहानी से भी परिचित हुए. दोस्तों, कविता और कहानी साहित्य के स्वरूप हैं. साहित्य के विविध स्वरूप होते हैं. इन स्वरूपों के द्वारा साहित्य अभिव्यक्त होता है. आज हम साहित्य के अन्य एक स्वरूप के बारे में परिचित होने वाले हैं. उस स्वरूप को जीवनी बोलते हैं. जीवनी यानी जीवन चरित्र, जिसे जीवन वृत्तांत भी कह सकते हैं. जीवनी 2 प्रकार की होती है. कोई व्यक्ति अपने अनुभव के बारे में लिखता है तो उस जीवनी को आत्मवृत्तांत अथवा आत्मकथा कहा जाता है. लेकिन यदि कोई लेखक या लेखिका अन्य कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ लिखता है तो उसे केवल जीवनी या जीवन चरित्र कहा जाता है.
आज हम जिस जीवनी से परिचित होने वाले हैं उसका शीर्षक है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। लेखिका का परिचय प्राप्त करें। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल उवारसद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म सन 1954। अभ्यास एमए, एमफिल, पीएचडी। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। इस जीवनी के लेखिका डॉक्टर कोकिला बहन पारेख का परिचय प्राप्त किया और अब हम इस जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिसियान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झूलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्स बाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्स बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी
और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए।
यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बैठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। दोस्तों, हमने इस जीवनी के माध्यम से सुप्रसिद्ध अवकाश यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में जाना। इस जीवनी के माध्यम से हिंदी भाषा के कुछ नए शब्द से भी हम परिचित हुए, कुछ मुहावरे भी जाने, काफ़ी कुछ हमने इस जीवनी के माध्यम से प्राप्त किया। तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा। स्वाभाविक ही इस जीवनी के द्वारा हम एक प्रतिभाशाली महिला से हमारा साक्षात्कार हुआ है। तो फिर मिलेंगे और इसके बारे में आगे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।